The next is the N-glycosidic bondage. The sugars are linked. We know that nucleotides are formed by the addition of a ribose sugar to a nitrogenous base, and with the phosphate group, addition of phosphate group, nucleotides are formed. So the bonding between a ribose sugar and a nitrogenous base is N-glycosidic bond. Sugars are linked to the heterocycles by the N-beta N-glycosidic bond, almost always N1 of the pyrimidine and N9 of the purines. कि जब भी शुगर ने मिलना है उसके साथ नाइट्रोजनस बेस के साथ, तो इन केस ऑफ उसने बनाना है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ये उसी तरह का बॉन्ड है जिस तरह के हमने दो शुगर को आपस में मिलाया था तो वहाँ पे भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना था, लेकिन वहाँ पे हमने देखा था ऑक्सीजन बीच में थी, इसलिए उसको ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं. यहाँ पे नाइट्रोजन है इसलिए इसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं. तो ये पायरामिडीज में ऑलमोस्ट ऑलवेज N1 के साथ जो है वो राइबोस शुगर मिलेगी, जबकि पायरामिडीज में प्यूरिन्स में ऑलमोस्ट ऑलवेज जो है कार्बन नाइट्रोजन 9 जो है उसके सेकेंड रिंग का उसके साथ जाके राइबोस शुगर मिलेगी. दिस इज द diagram which shows the adenine, which is a purine, and we have discussed in the previous slide that almost always at carbon atom nitrogen of the N9, this is the 9th nitrogen of the second ring of this purine base adenine, and it forms with the N-glycosidic bond because there is a nitrogen in the double second ring of the purine bases or the adenine, and it will be bonding with the glycosidic bonding is formed between this ribose, this is a ribose sugar, and between this 9th nitrogen of the second ring of the adenine. And we can see here that 1, 2 and 3 phosphates are attached with the different bonding. We will discuss कि कौन-कौन सी bonding इनके दरमियान होती है. And this is a finally structure of an ATP. The N-glycosidic bond is formed by removal of elements of water. जो जिस वक्त N-glycosidic bond बनेगा तो उसमें से एक वाटर निकल जाएगा, एक की तरफ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा और एक तरफ से जो है ना हाइड्रोजन निकलेगा. Hydroxyl group from the pentose sugar and the hydrogen from the base. कि पेंटोज शुगर में से OH और हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो बेस से निकलेगी, तो ये दोनों मिलके वाटर बना देंगे, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बीच में से एलिमिनेट होगा और ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. दिस इज द डायग्राम विच शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन adenine molecule or a base, nitrogen base, and we can see here that hydrogen is attached with this nitrogen of 9 of the second ring of the adenine, and on the carbon atom number 1 of this ribose sugar, which is this carbon atom 1 is denoted as prime. ये prime अगर लगा दें तो इसको differentiate करने के लिए हम इस पे prime लगाते हैं. तो इसके साथ से this hydroxyl group is removed and ultimately a water molecule is removed from both of these molecules, from the hydrogen from this nitrogen base and hydroxyl from this ribose sugar, and finally this structure is formed, which is combination of a nitrogenous base and ribose sugar with the removal of water and formation of N-glycosidic bond. Thus, it is a condensation reaction जिसमें water निकल जाता है, उसको हम condensation reaction बोलते हैं. जहाँ water add हो जाता है और कोई चीज़ टूट जाती है उसको हम hydrolysis बोलते हैं. Similarly, these are similar to O-glycosidic bond formation in the carbohydrates. Carbohydrates में भी जब दो monomers जुड़ते हैं, एक जो है मोनोसेक्राइड जुड़ता है दूसरे मोनोसेक्राइड के साथ, तो ये दोनों मिलके ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है. लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है,
यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है और ऊपर नाइट्रोजन है, इसलिए उसको एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं. However, N-glycosidic bond have nitrogen atom instead of oxygen linking the two residues. दो residues कौन से हैं? one is the sugar and other is the nitrogenous base. And यहाँ पे नाइट्रोजन है linking में, इसलिए इसको N-glycosidic bond कहते हैं. The addition of glycosidic bond to the nitrogenous base is indicated by the name change. अब ये nucleotide such as the फ्रॉम एडेनिन टू एडिनोसिन, जब एडेनिन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल गया उसका राइबोस का, और उसमें से एडेनिन से एक हाइड्रोजन निकल गई, अल्टीमेटली एक वाटर निकल गया, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया. एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने से एडेनिन का नाम जो है उसका नॉमेनक्लेचर चेंज होके इट इज नोन एज एडिनोसिन फॉर द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. सो ये जब शुगर उसके साथ लग जाती है, नाइट्रोजनस बेस है उसके साथ लग गई, तो वो न्यूक्लियोसाइड बन गया. उस पर्टिकुलर न्यूक्लियोसाइड को एडिनोसिन बोल देते हैं, और इसके साथ 1, 2, 3 फॉस्फेट लग जाएं तो इट इज नोन एज द न्यूक्लियोटाइड्स.